Hello students, welcome to Sapex Education. So topic to discuss in today's video is motion of electric charge inside uniform magnetic field. Okay, uniform magnetic field के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कोई मोशन कराएंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ क्या होगा, that we will study in this topic. Okay, so there are three parts in this topic. Let us consider first part first of all. Let us determine the work done by मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्ज. मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है उसके ऊपर कितना वर्क करता है. लेट अस डिटरमाइन दैट थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to consider that uniform magnetic field. Okay, so let me consider uniform magnetic field over here. I am drawing the magnetic field uniform. You can see the magnetic field lines are going inside the plane of this board. क्रॉस किया है मैंने और they are equidistant and parallel. That is ये magnetic field uniform magnetic field है. Now if we place a small q charge in this uniform magnetic field, small q charge, okay, magnetic field is vector b. So what happens? Nothing happens ना. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को जस्ट हम प्लेस करेंगे तो कुछ नहीं होगा. दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. बट एज सुन एज वी make this charge moving, then magnetic field will exert force on the charge. So let the charge is starting its motion with velocity v inside the magnetic field perpendicular to the magnetic field. Okay, magnetic field के साथ perpendicularly वो motion कर रहा है. Mind well, magnetic field is going inside the plane and velocity is in this direction. So क्या होगा इससे? मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा. दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर एंड दैट फोर्स वेक्टर एफएम, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, इज इक्वल्स टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी. दिस इज द फॉर्मूला मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स. राइट. सो यहां पे जो फोर्स लग रहा है चार्ज के ऊपर बाय मैग्नेटिक फील्ड, that force is a cross product of velocity of charge and magnetic field. And we have studied in 11th standard that cross product, दो फिजिकल क्वांटिटी की क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो हमें रिजल्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, that physical quantity will be perpendicular to both these two physical quantities. That means here we can say that magnetic force is perpendicular to velocity as well as magnetic force is perpendicular to magnetic field. Right? अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर फोकस करना है. मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन दिस चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. ओके, हमें वर्क डन फाइंड करना है ना. तो वर्क डन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगा रहा है. उसके बाद हम वर्क फाइंड करेंगे बिकॉज वर्क डन इज एक्चुअली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट है. तो फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज के ऊपर लग रहा है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. नाउ वी ऑल नो दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, राइट और नॉट? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होगा. बहुत कॉमन सेंस की बात है. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस चार्ज विल आल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. लेट अस इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट बाय डी. वेक्टर डी से डिनोट कर देता हूं मैं उसको. ओके, सो व्हाट यू कैन सी, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट हैव द सेम डायरेक्शन. सो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर हम रिलेशन लिखे उनकी डायरेक्शन के बीच में, so they both are also perpendicular to each other. Magnetic force Fm vector is perpendicular to displacement vector because v और d की डायरेक्शन सेम है और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा. नाउ वी कैन फाइंड आउट द वर्क डन by the magnetic field on this small q charge. Formula for work done is what? Fs cos theta, या तो you can say Fd cos theta. We have considered displacement as d here. Okay, so this is the basic formula for work done. Fd cos theta, where theta is what? Angle between force and displacement. Angle between force and displacement. But
फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा. cos 90 will be 0. So it is clear that work done is 0. Okay, so it is really important result that magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई स्मॉल क्यू चार्ज मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है. That is this force we have studied, magnetic Lorentz force. But that magnetic field cannot do any work on that moving charge inside it. Okay. Now यहां से एक और भी कंक्लूजन निकलता है. वर्क डन के साथ दूसरा भी हम कुछ रिलेट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं देखते हैं. In 11th standard you might have studied this formula. W is equals to delta K. Right, work energy theorem. Work done is equals to change in kinetic energy, ऐसा होता है. But in this particular situation, work done is 0. Work done is 0. Work done is 0. That means kinetic energy is also 0. Change in kinetic energy is also 0. Change in kinetic energy 0 है तो kinetic energy कैसी रहेगी? Constant रहेगी. Because उसमें कोई change ही नहीं हो रहा है तो kinetic energy constant रहेगी. Kinetic energy constant. Formula for kinetic energy we all know, half mv square. उसमें मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही रहेगा, मास डज नॉट चेंज. वेलोसिटी दैट इज स्पीड, काइनेटिक एनर्जी है तो हमें स्पीड बोलना चाहिए. तो स्पीड, काइनेटिक एनर्जी सेम है, कांस्टेंट है, तो स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी. सो वी कैन से दैट स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट व्हेनेवर इट इज मूविंग इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर सकता है. अगर हमने ये चार्ज पार्टिकल को सपोज 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अंदर मोशन कराई है तो उसके पाथ में कोई भी चेंज हो सकता है, डिफ्लेक्ट हो सकता है, व्हाटएवर. ओके, बट उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं, उतनी ही स्पीड से वो मोशन करता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी भी उसकी सेम रहेगी. दैट्स इट फॉर दिस.